Hello, very good evening, students. Welcome to BYJU'S exam prep. Very good evening, all of you. I hope everyone is good, fine. Okay, so today we're gonna practice the questions from the industrial engineering, right, for the ESE 2024, which is gonna come in this Sunday, right? So I hope you are all practicing, you all are revising because ESE में इस समय you should only be doing one thing, that is revision. ठीक है, रिविजन करना है. रिविजन कैसे करना है? बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, क्योंकि ESE में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी बेसिक क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. That is the reason I've taken in today's session some PYQ also, some practice session also, so that you can all practice for this ESE 2024. Okay. Okay, fine. So very good evening. Let me check from my end also. I think it's all good and perfect with audio and video. Yes. Okay, चलिए कैसे हैं आप लोग सब? Very good evening guys. So yesterday we have solved 25 questions from the engineering mechanics. Before that, yesterday only I think we have solved the standard SQC questions from the non-technical part, right? So it's very important, you need to practice on regular basis, be in touch with the subject, then only you will be having that upper hand over other aspirants. ठीक है, क्योंकि इस ESE का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, दैट इज द सिलेबस इज ऑन अ वास्ट साइड है कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू गेट एग्जामिनेशन, एंड दैट मेक्स ESE इंटरेस्टिंग एंड अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन. एंड बट इफ यू आर गोइंग स्ट्रेटेजिकली तो आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिविजन की जरूरत. Okay, hello Shreyas, very good evening. Please do confirm my audio and video all good, all perfect, there is no problem or difficulty, right? Okay. Chali. So before starting the session, let me help you out. You can do connect with me on my Telegram channel, that is Mechanical by Suraj, which is there on the screen that you are seeing. Mechanical by Suraj Gopi. You can search in the Telegram channel. वहाँ पे I'll be sharing the links for the different sessions. I'll be sharing for the plans also. कौन सा session कब होगा, so that you will be having a better understanding. Okay, no problem. Fine. Right. So today is the last day to avail this code, where you can get flat 20% off on the gate courses, right? And those are planning for 25, उन सारे बच्चों के लिए 25 या 26 के लिए प्लान कर रहे हैं. We have already live the session in Hindi and English batch, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है to get that flat 20%. Okay, चलिए, so shall we begin? Yes, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट the weightage of this subject in ESE, normally you can expect 6 to 7 number of questions from this subject, और वो भी बहुत straight away easy question, numerical oriented questions देखने को मिलते हैं. Specifically you can get question from forecasting, or you can get question from your PPC, or you can get question from the inventory, और एक question अगर आ सकता है तो you can expect from the linear programming. Okay, तो चलिए let's start with the first question on the screen. The company intends to use exponential smoothing technique for making a forecast for one of its product. The previous year's forecast has been 78 units and actual demand for the corresponding period is turned out to be 73. If the value of the smoothing constant is 0.2, the forecasting for the next period will be. So it's a question from the forecasting exponential smoothing method from the forecasting technique. बहुत easy question है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? Option A 73, option B 75, option C 77, या option D 78. Use exponential smoothing method to get the answer to this. चलिए quickly. Use exponential smoothing method to get the answer to this. देखो, if I talk about exponential smoothing method, बहुत सिंपल सा टेक्निक है. F t plus 1 is equal to ft plus alpha dt minus f. The answer very good. चलिए, so they have given you the forecast for the time for the time period is coming out to be 78, ये आपको given है, और actual demand is coming out to be 73 units. Alpha आपको दे रखा 0.2. Let us place all the values. तो ये आ जाएगा 78 plus 0.2 into 73 minus 78. So this is 78 plus 0.225, that is with a negative sign.
नेगेटिव साइन, क्योंकि ये माइनस साइन आएगा. So that is equal to 77 units is the correct answer. Option C. Very good, Shreyas. Shreya Patel, very good. Option C is correct answer. 77 units is the final correct answer. Okay. 77 units is the final. Perfect. Very good, Vishwa. Option C is correct. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, let's proceed to the next problem on the screen. This question is from the inventory EOQ model. In the basic EOQ model, if the demand is rupees, if the demand is not rupees, is 60 units per month, the ordering cost is rupees 12 per order, holding cost is rupees 10 per unit per month, then what is the value of economic order quantity? What is the value of EOQ, that is Q star? What is the value of Q star that you are having? Please tell me in the comment section. बताइए जल्दी से. Option A 12, option B 144, option C 24 और option D 28. क्या लग रहा है, क्या आंसर है आपका? बेसिक EOQ मॉडल से दिस क्वेश्चन इज बिंग फ्रेम, सो डू लेट मी नो एंड प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ द यूनिट्स आल्सो, राइट. बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनुअल डिमांड कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 60 into 12 because we are talking about units per year. Ordering cost, that is equal to rupees 12 per order. Holding cost, that is equal to rupees 10 per unit per month है, हमें ईयर में हमेशा निकालना होता है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 10 into 12 per unit per year. First you have to place the simple formulation Q star is equal to 2D CO by CH. Root of this simple formulation है 60 into 12, CO is 12, CH is 10 into 12. Solve it, you will be getting exactly this is equal to under root of 12 into 12, that is 12 units per order. So we have to place 12 units every time. So the economic order quantity is option A 12. Option A. Okay. Right. बहुत बढ़िया. Very good. Done. कोई डाउट है तो प्लीज यू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑलवेज डू रिमेंबर व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लीज टेक केयर ऑफ द यूनिट्स. यहाँ तो चलो द होल्डिंग कॉस्ट एंड द डिमांड वाज एक्चुअली गिवन इन पर मंथ, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा इवन इफ यू आर नॉट कन्वर्टिंग. But sometimes what happens, they are giving you the annual demand in per year and they're giving holding cost in per month, then you have to convert this into per year or else you'll be getting the wrong answer. ठीक है, तो यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 on the screen. In simplex method, the variable which have not been assigned the value 0 during the iteration are called which of the variables? Basic variable, actual variables, artificial variables or none of the above. आपको ये बताना है आइट्रेशन करते समय which of the variables is not assigned the value 0. आइट्रेशन करते टाइम there are two variables that you are always coming across. One is basic variable and second is non basic variable, है ना, राइट. तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. बेसिक वेरिएबल, एक्चुअल, आर्टिफिशियल या नन ऑफ द अबव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Whenever we are doing the iterations, there are two set of variables that we are assuming. One is basis or also known as basic variable and second is non-basic variable. यही होता है, याद आया? And the non-basic variable are those variables which we are assuming this value to be equal to 0. ये 0 assume करने से we are getting the value of basic variable. तो basically the option A is the correct answer. Okay. The variables which do not or which have not been assigned the value 0, that is we call it as basic variable or we can call it as simply basis. तो basis भी बोलते हैं. Is this clear? Option A is the correct answer, right? Because simplex topic से आपको कोई numerical नहीं पूछा जा सकता in the ESE prelims. Mains में पूछते हैं, prelims में नहीं पूछते because अगर वो prelims में simplex से numerical if they are asking, भाई उसमें तो 15 या 10 मिनट तो आपका इन्वेस्ट हो जाए. एंड गेट पे भी नहीं पूछते.
So it's very important, you need to understand. Exam oriented, always need to prepare. Okay, chaliye. Now consider the following programming problem. We are having the maximum z is equal to 2a plus 3b subjected to there are three constraints being given. You have to tell me which what can one say about the solution. किस टाइप का solution आपको देखने को मिल रहा है. Let us write the objective function, that is z max is equal to 2a plus 3b, right? And we are having the constraint that is a plus b less than equal to 10. For a plus 3b is less than equal to 30 and a plus b is less than equal. So there are three constraints being given along with the non-negativity criteria. आपको ये बताना है which of the following is correct. अगर आप एक चीज ध्यान दें, if you try to visualize one very important thing. अच्छा, this is 2a plus 3b. One very important thing that 4a plus 6b. If you see the second constraint, constraint number 2 can be written as 2a plus 3b is less than equal to 15, है ना? And if you try to visualize the slope of the objective function and one of the constraint is exactly same. तो अगर आपके पास इस तरह का situation होता है और अगर this constraint is not a redundant constraint, then we can surely say this is always gonna have the multi-optimal or alternate optimal solution, right? But we have to check by plotting the graph, right? तो चलिए एक काम करते हैं, let us try to plot the graph by solving by this question by graphical method. तो पहला constraint है a plus b less than equal to 10, so we can say a by 10 plus b by 10 less than equal to 1. Second constraint is 2a plus 3b is less than equal to 15. We can write it as a by 15 by 2 is 7.5 plus b by this will be 5 less than equal to 1. Third constraint is a by 8.5 plus b by 17 less than equal to 1. So I have written all the three constraints on the screen. तो चलिए अब एक काम करते हैं, let us plot this. तो यहाँ पे plot करते हैं. I'm taking on the x axis a, on the y axis I'm taking it as b. तो first constraint है 10, 10. I'm taking maximum आपका 17 तक जा रहा है, तो इसको 10 लेते हैं. So 10, 10, this is the first constraint that we are having, less than equal to towards the origin आएगा. Constraint number 1. Second constraint is 7.5 and 5. 7.5 and 5. Let's say this is 7.5. This is 5. दूसरा constraint हो गया. Constraint number 2. And third constraint is 8.5 and 17. This is 8.5 and this is 17. अच्छा मुझे बताइए, out of the three constraints, is there any constraint which we can assume to be a redundant one? Yes, क्योंकि feasible region is this one only. This is the feasible region. तो अगर आप ध्यान से देखें, constraint number 1 and constraint number 3 both are the redundant constraint. Both are the redundant constraint, right? और constraint number 2 is only deciding you the final optimal solution. और constraint number 2 का जो slope है वो already objective function के slope के साथ match कर रहा है. So without even further solving, we can surely say option A is the correct answer. ठीक है, हम इसको चेक भी करेंगे अभी, but you need to understand this logic. अगर आपके पास ऐसा कोई constraint है जो feasible region में participate कर रहा है और वो उसका जो slope है that is exactly having the same slope as that of the objective function, then we can surely say that is having multiple optimal or alternate optimal solution, right? इसको हम prove भी करते हैं. I'm taking this as point तो क्या हमारे x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, right? So what is the coordinate of point x? That is equal to 0, 5. The coordinate of y is equal to 7.5, 0. And what is the objective function? Z is equal to 2a plus 3b. Can solve it and tell me zx equal to कितना आ रहा है? That is equal to 15, है ना? And zy is equal to 2 into 7.5 is also 15. So we are getting the same value. That means this is an example of a alternate optimal or multi-optimal solution.
Okay, so option A is the final correct answer. Done. चलिए, let's proceed to the next question. Question number 5 on the screen. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पोर्ट सीपीएम से देखने को मिलते हैं ईएसई में, सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द पोर्ट एंड सीपीएम. In the following network shown below, the critical path is along. You have to identify what is the critical path. चलिए, quickly. The time is also being given on the arrows. What is the critical path? Quickly. ना arrows. What is the critical path? Quickly, quickly. Comment section में आंसर आ जाना चाहिए अभी तक, है ना? Simple है. Identify the critical path, get the answer, and then we'll be proceeding to the next question. So we are having 0, 0. This is 3. 3 plus 4 is 7. 3 plus 2 is 5. But this is dummy, तो आपको 7 आएगा. Highest, maximum, longest time taking path हमें select करना होता है. 7 plus 5 is 12. 7 plus 3 is 10. Very good, sharers. This is 12. 10 plus 4 14. 12 plus 5 17. This is 20. 20 यही आ रहा है, प्लीज चेक. 24 आ रहा है. ओके, एंड दैट टू वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पाथवे. So we are getting the critical path. We are getting the critical path that is along 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. I think option B is the correct answer. Very good. Option B is the final correct answer. Okay. Right. Option B is the final correct answer. Clear? Fine. Done. कोई डाउट है किसी को? Please do let me know. Is there any doubt you are having in the comment section? तो बता सकते हैं. बहुत बढ़िया. Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन. In manufacturing management, the term dispatching is used to describe. मैन्युफैक्चरिंग में जो डिस्पैचिंग टर्म है इसको कहाँ यूज करते हैं? डिस्पैच ऑफ सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच ऑफ फैक्ट्री मेल, dispatch of the finished product of the user, dispatch of the work orders through work shop floor. What is the meaning of this word dispatching? देखो हमेशा याद रखिए, मैन्युफैक्चरिंग में डिस्पैचिंग का मतलब होता है आपको शॉप फ्लोर में डॉक्यूमेंट भेजना होता है कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, इट इज द डिस्पैच ऑफ द वर्क ऑर्डर्स टू द शॉप फ्लोर, ताकि हम लोग अपना जो जॉब है या प्रोसेस है स्टार्ट कर. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पैचिंग. ओके fine. Dispatching is nothing but dispatch of the work orders to the shop floor. Option D is the correct answer. चलिए next question, question number 7 on the screen. अच्छा, 7th question जाने से पहले every day we are having on all Monday to Saturday we are having this ground zero series going on, जहाँ पे 25 के लिए we are now preparing you free classes on our app for all the branches. You can do on the screen. The entire team is there. पूरी टीम आप लोग के साथ इंडिविजुअल ब्रांच स्पेसिफिक के साथ वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. दिस आर सम क्वेश्चन यू कैन सी इन द ESE. So there are two lists. List 1 is the technique and list 2 is its application where we can use that technique. You have to tell me what is the correct combination of the list 1 and list 2. Options को eliminate भी कर सकते हैं. Try to identify the best possible way to get the answer. Linear programming, transportation, assignment, queuing model. Quickly. A, B, C or D? Option A, option B, option C और option D. अब देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे पास बहुत सारे solutions हो, है ना, where we need to have there are multiple decisions and after that we have to identify the best possible decision. So definitely linear programming is basically used for product based decision. So A का है 3. अगर A 3 होगा, option A and C, that is we can eliminate.
ट्रांसपोर्टेशन मॉडल वी आर यूजिंग फॉर द लोकेशन वेयर हाउस. याद है ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास वेयर हाउस होता है, फैक्ट्री होता है, एंड वी आर सेंडिंग different materials whose unit cost is being given. So transportation model में we are identifying the minimum cost, right? It's a specific, or we can say special case of a linear programming. So transportation we are using for the warehouse location. 3-1 कोई options eliminate हो रहा है? बिल्कुल option B is the correct answer. Even though we have not read option C and D, मतलब list 1 में C and D we have not yet read, फिर भी हमें आंसर मिल गया. चलिए assignment model that we are using for the allocation. Whenever I'm talking about assignment, we are allocating the persons or machine to the different jobs. तो allocation जहाँ भी बात करेंगे वहाँ पर we are talking about assignment model. तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. Queuing model we are using whenever we have to have the server. बहुत सारे servers से कितने number of servers होने चाहिए in a service based organization. So 5. 3, 1, 2, 5 option B is the correct answer. ठीक है, आपने देखा होगा किसी मेट्रो स्टेशंस में यू आर सीइंग देयर आर ओनली 2 काउंटर्स, और लेट्स से इन सम रेलवे स्टेशन देयर आर ओनली 2 काउंटर्स, एंड इन बिग जंक्शंस वी आर हैविंग 15 to 20 counters. Why we are having this kind of variation? Because definitely the number of customers that is coming to that particular junction will be very high as compared to that of small. So उसके basis में we are defining by the calculation by using the queuing theory concept. Okay, चलिए question number 8 on the screen. The solution in a transportation model, the solution that of not of dimension of the matrix is m cross n is said to be degenerate if it has. What is the condition for degenerate solution in a transportation model? If the solution is degenerate, then we can surely say m plus n minus 1 should be m plus n minus 1. ए पक्का? नॉन डीजनरेट के लिए ए होता है. इफ आई से नॉन डीजनरेट के लिए m plus n minus 1 should be exactly equal to number of allocation. यहां पे कहानी कुछ और है. they are talking about the degenerate solution. तो degenerate के लिए it should be always be less than m plus n minus 1. Okay, it should always be less than m plus n minus 1. Option B is the correct answer. So degenerate solution के लिए m plus n minus 1 should be less than the number of allocation. ठीक है, फाइन. आप उल्टा बोल रहे थे, अब नॉन डीजनरेट का सोल्यूशन बता रहे थे. बेसिकली उल्टा लिख दिया. नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी लेस और मोर देन दैट ऑफ दिस. चलिए नेक्स्ट. इन द टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड. अच्छा, टाइम स्टडी मॉडल में जो रेटिंग फैक्टर है वो किस टाइम को निकालने के लिए यूज करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम, मेरिट रेटिंग ऑफ द वर्कर, फिक्सेशन ऑफ द इंसेंटिव रेट और नॉर्मल टाइम ऑफ द जॉब. Rating factor is multiplied to calculate which time. बहुत easy question है. This is a question from the time study model. अगर आपको याद होगा, if I want to calculate normal time होता है that is equal to observed time into rating factor. ये होता है into rating factor, right? And what is standard time? Standard time is equal to normal time plus allowances. Okay, fine. तो यहां से अगर मैं बात करूं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एंड नॉर्मली वी आर टेकिंग अलाउंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल टाइम. तो अगर जो भी परसेंटेज है तो वी कैन ऐड एंड वी कैन गेट द वैल्यू. ये इस पे न्यूमेरिकल भी मैंने लिया है आज, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक वेरी क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. Select the correct answer using the given code. On the list 1 we are having some cost being given. On list 2 we are having the corresponding graph being given. आपको ये बताना है which number is giving you which terminology. Quickly, which number is giving you which term? Option A, option B, option C और option D. क्वेश्चन बड़ा इजी है. देखो, अगर आपको याद होगा
जो एक्स एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस में होता है द क्वांटिटी और द प्रोडक्शन यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस, और वी कैन से ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग प्रोडक्शन क्वांटिटी. तो भाई वन जो है दैट इज D1 है, D1 है, तो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड डी. ठीक है, फाइन. फिक्स कॉस्ट, दिस इज द फिक्स कॉस्ट दैट वी आर हैविंग, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट दैट वी आर हैविंग. ये वाला आपका वेरिएबल होता है. नंबर 2 इज द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. फाइन. नंबर 4 इज द रेवेन्यू, revenue, and we can say, or we can say this is variable cost, this is your total cost. This is basically revealing you the total cost. Total, your total cost is equal to fixed cost plus variable cost. So जो 2 है that is your total cost. This is 2, B2, B2. This is 1. Revenue or sales is 4. And fixed cost is 3. So we are getting option 3241. Option C is the correct answer. Yes, 3241 option. This. Okay, option C is the correct answer. Done. Okay, perfect. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Now, before moving to the next question, every day branch wise पोस्ट गेट सेशंस इज हैपनिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म. सो मेक श्योर आप सारे सेशंस को अटेंड करें, क्योंकि इसमें आपको ये आइडिया लगेगा व्हाट वाज द प्रीवियस कट ऑफ, हाउ मच स्कोर वाज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर ब्रांच. तो वो सब आइडिया आपको इन सब कट ऑफ क्रॉनिकल्स ऑफ डिफरेंट आईआईटीज ऑन एवरी डे फ्रॉम 4:30 हर रोज 4:30 बजे ये सेशन आपको देखने को मिलेगा. मंडे टू फ्राइडे विल बी एबल टू सीइंग दिस सेशन. Okay, so make sure you are joining this and you get the benefit of all the information. कभी कभार होता क्या है, you deserve to be in the top IIT because of lack of knowledge you land up in a older NITs, right? So definitely वो lack of knowledge की वजह से you should not be आप गलत कॉलेज में एडमिशन ना लें. So you should be seeing what is the best possible we can say alternates that you are having by your score. Okay, so you can do attend on our app में है, YouTube पे नहीं होगा ये sessions. The regular question from the numerical from the time study model. The following data is available from the time study on a job. Observed time is 0.75 minutes. Rating is given as 110. Relaxation allowance 10%, allowance 3, and daily allowance is 2. All the allowances are expressed in percentage of normal time. You have to tell me what is the approximate standard time for this job. Just मैंने आपको अभी एक formulation बताया था, you have to follow that only. चलिए, so first of all calculate the normal time. Normal time is equal to observed time into the rating factor. Observed time is कितना? That is 0.75. Rating factor is 1.1. Calculate what is the value you are getting. Calculate what is the value you are getting. I think you will be getting 0.835. Yes, 0.835 or 825 minutes. But you have to calculate the standard time. Standard time क्या होता है? That is equal to normal time plus allowance, right? Or allowance क्या? Percentage of normal time. So we can say this is normal time plus allowance is 10 plus 3 plus 2, that is 15. So 0.15 into normal time. So this is normal time into 1.15. So this is 0.825 into 1.15. बताइए क्या नियरेस्ट वैल्यू आ रही है आपके पास? ऑप्शन ए 0.95. देखो डेफिनेटली 0.85 से तो ज्यादा होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. ओनली वन ऑप्शन इज बीइंग लेफ्ट आउट, ऑप्शन इज, क्योंकि अगर इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद मोर देन दैट ऑफ 1 तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, राइट? सो वी कैन से 0.95 मिनट्स इज द फाइनल करेक्ट. 0.95 मिनट्स इज द फाइनल करेक्ट. कभी कभार ऑप्शंस को देख के यू हैव टू प्रोसीड, क्योंकि देखो ESE में कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, सो डेफिनेटली नीड टू हैव सम स्मार्ट वर्क व्हाइल ड्यूरिंग द कैलकुलेशन. कुछ ऑप्शंस को
हटा के या some approximations को करके you will be able to get the correct answer in a less time. Okay, very good. Option A is correct answer. Very good Vishwa, Shreyas. Done. चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन 12 on the screen. Consider the following statements. You have to tell me which of the following statement is related to the queuing model. मतलब कहाँ पे हम लोग queuing theory को use करते हैं. The queuing theory is used for inventory problems, traffic congestion issues, job shop scheduling. Which of the following is given correct above are correct? A, B, C or D? भले यार क्यूइंग मॉडल कभी भी हम लोग इन्वेंटरी रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ नहीं करते. क्यूइंग थ्योरी इज ऑलवेज यूज इन द सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सर्विस बेस्ड organization matlab the customer will be coming and they'll be taking the service and they'll be going, right? So if I want to study about the traffic congestion or the job shop scheduling, definitely they are using the the queuing theory. Inventory में we are never gonna use a queuing model theory, है ना? तो option कौन सा आया? C is the correct answer. Very good. Option C is the correct answer. Inventory में नहीं use करते. We are always using queuing theory in a service based organization. That is your customer हमारे service they will be taking the service from the organization. That kind of there only we are using the queuing. Okay, option C very good is the correct answer. चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन 13 on the screen. In industrial engineering the standard time is equal to, this is one of the PYQ of ESE. Do let me know what is the answer. Just मैंने आपको बताया A, B, C or D. Standard time is equal to what? Normal time plus allowance, observed time plus allowance, observed time into rating factor, normal time into rating factor. A, B, C or D? Option A, option B, option C or option D? अभी just आपको बताया. What is standard time? This is your standard time. Option A. ये जो है this is your normal time. Observed time into rating factor is the normal time. Normal time plus allowance is the standard time, right? So option A is the final correct, right? Understood? Just आपको बताया था ना, normal time is equal to observed time into rating factor. Standard time is equal to normal time plus allowance. Okay. Usually allowance are equal to the percentage of normal time. This percentage of normal. ठीक है? Okay. So you can easily calculate the normal time and standard time for any job or any work. Done? चलिए 14th question on the screen. अच्छा 14th question जाने से पहले today at 7:30 Rakesh sir will be coming up live and he'll be discussing about some important strategy to give you 1 year detailed preparation for GATE 2025, right? चलिए next question. Next question. Match the list 1 and list 2. List 1 is the chart and list 2 is its application. You have to do, let me know which is the correct combination of answer. चलिए देखिए आपके पास options हैं. तो let me write the options over here. तो आपके लिए easy हो जाएगा. Option E, option E. बताइए. 1 चलिए what is the correct answer that you can see? Some eliminations that you can do. कुछ आप eliminate कर सकते हैं options को and you can get the final correct. Operation process chart, flow process chart, flow diagram per chart, scheduling project operation. Then you have to study backtracking and traffic congestion, to analyze the indirect costs such as material handling costs, to study the relation between the operation. Which of the following is the correct combination? Quickly. कुछ options आपके eliminate हो रहे हैं. देखो PERT analysis कहीं ना कहीं आपका relate करता है scheduling के साथ, right? So D का है 1. That is we can surely say D is 1. So from here we can eliminate option D. ठीक है, तो B और C में से we have to now process flow chart को उन्होंने 3 बोला है. process flow chart के to analyze the indirect cost such as material, बिल्कुल सही.
process flow chart is basically used to analyze the indirect costs such as the material handling cost. Now we have left out with this one, 2 and 4. Operation flow chart and flow diagram. Which of the following is correct? Quickly read the statement carefully and tell me the correct answer. अगर आप ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट की बात करें, definitely we are talking about the operation process chart. So to study the relation between the operations, that is basically being used. So A का है 4, A 4, 3, so this will be 2, and this, so 4 3 2 1, 4 3 2 1, any option? Option B is the correct answer. 4 3 2 1, option B is the correct answer. Okay, done. All right, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. देखो हमेशा याद रखिए, whenever you are getting match the followings, ESE में पूछे जाते हैं, so there you need to eliminate the options. It giving you a correct answer more quickly, and the chances of getting the wrong answer will be very very less, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 on the screen. अब बहुत easy question है. In CPM the network in CPM network the critical path denotes. What does the critical path means in a CPM network? The path where maximum resources are used, the path where minimum resources are used, the path where delay of an activity prolongs the duration of the completion of the project, the path that gets monitored automatically. बताइए इनमें से कौन सा सही है about the critical path? Quickly, A, B, C or D. क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ वो होता है अगर आप कोई भी एक एक्टिविटी के ड्यूरेशन को अगर आप एक्सटेंड करते हैं या डिले करते हैं, उससे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी डिले होता है, राइट? दैट इज ए क्रिटिकल पाथ. तभी तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल. तो क्रिटिकल पाथ मतलब वो है, क्रिटिकल पाथ में जो जो एक्टिविटी से इफ यू आर डीलिंग दैट एक्टिविटी बाय इवन सिंगल डे, द एंटायर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी डिलेड बाय सिंगल डे, right? So by seeing the correct option, we can say option C is the correct answer, because the path where delay of an activity prolongs the duration of the completion of the project. अगर कोई भी एक्टिविटी को डिले करते हैं in the critical activity, that will definitely delay the completion of the project. So option C is the correct answer. ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं. Let us suppose this is, let us take one example. So let's say this is 4, this is 5, this is 6. So what would be the critical path? Definitely this will be the critical path. Fine. अगर मैं let us suppose if I try to change this to 4, अगर मैं 3 से बढ़ा के इसको 4 भी कर दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 9 plus 6 आपका तब भी जो पाथ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट होगा that will be 15 days. But let us suppose if you are increasing this path, this from 4 to 5, then this will be 5, this will be 10, this will be 16, then our entire project will be increased by 1 day. ठीक है, तो critical path denotes that the path where delay of an activity prolongs the duration of the completion of project. इसका मतलब ये है अगर मैं critical path वाला activity को delay करूं तो my project completion time will be delayed. Option C is. चलिए question number 16 on the screen. The time estimates of a project activity are optimistic time being given, most likely time, and pessimistic time is being given. What is the variance in days for this activity as per beta distribution? Quickly, आपको optimistic time given है, most likely time given है, and pessimistic time given है. You have to calculate the variance. बहुत simple formulation. Yes, करीना बताइए. श्रेया, विश्वा. What is the variance for this activity? Variance क्या बताता है? It is the degree of uncertainty of that particular activity. कितना uncertain होगा that particular activity, that is being resembled by the variance. And how we can calculate the variance? Variance is equal to TP minus TO by 6, 22 minus 10 by 6, that is equal to
12/6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल 4। ऑप्शन डी। बहुत लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं विच इज इनकरेक्ट, है ना। TP minus TO by 6 that is standard deviation. If I try to calculate the standard deviation is nothing but that is equal to under root of, होता है, that will be equal to 2 days. Okay, this is 4 days square is the value of the variance. Option D is the correct answer, right? ठीक है, ऑप्शन डी आने करेक्ट। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं। ये सब PYQ मोस्टली 90% ऑफ क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द ESE। ठीक है। जॉनसन्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर प्लानिंग अ जॉब शॉप फॉर। जॉनसन्स रूल कहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं? शेड्यूलिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ और सीक्वेंसिंग ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ जॉब्स और हाउ मेनी नंबर ऑफ मशीन्स, बताइए। जॉनसन्स रूल याद है? Johnson's rule is applied for 2 machine and number of jobs, है ना? ये 2 होगा। So Johnson's rule is applied where we have 2 machines and number of jobs. Option B. 2 machines and number of jobs. Option B. Clear है? Done. आगे बढ़े। These are all easy questions, है ना। चलिए 18 क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है। 2 jigs are under construction for a drilling operation to make a particular part. Jig A costs rupees 800 and has an operating cost of 0.1 per part, whereas jig B is having a cost of rupees 1200 and operating cost of 0.08 per part. The quantity of parts that we manufacture at which either jig prove equally costly. आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स को हमें मैन्युफैक्चर करें ताकि जिग ए हो या जिग बी हो, दोनों का ही सेम कॉस्ट हो। चलिए बताइए। देयर आर 2 जिग्स, जिग ए एंड जिग बी। जिग ए में आपका जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू 800 रुपीज एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 0.1 पर पार्ट and the fixed cost is for jig B is 1200 rupees and variable cost is 0.08. How many quantity of parts to manufacture so that equally either if you are taking A or B, both will be giving you the same cost. Simple है, total cost निकाल लेते हैं। The total cost of A is exactly equal to total cost for B. Total cost is fixed price for variable cost. So 800 plus 0.1x is equal to 1200 plus 0.08x. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x is equal to how much? 1200 minus 800 divided by 0.1 minus 0. Solve it and tell me what is the final correct answer that. So we are getting 400 by 0.02, है ना। What is the answer? To 20,000. See, 20,000 is the correct answer. 20,000 यूनिट्स बनाने से A और B किसी पे भी आप मैन्युफैक्चर करें, इट बोथ विल बी गिविंग यू इक्वली कॉस्टली। ठीक है, सेम कॉस्ट आएगा अगर आप A यूज करें या B यूज। Done. 20,000. Very good, very good. I hope you are not using the calculators. Calculator मत यूज कीजिए भाई, calculators is not allowed in. Consider the following statement in respect of break even point. आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड है। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है, दैट दे आर आस्किंग। So revenue is equal to total cost, revenue is equal to variable cost, profit या loss is equal to 0. Which is the following statement is related to the break even point? Break even point क्या होता है? There is a no profit no loss condition. That is basically no profit no loss condition. ये होता है। तो भाई statement 3 तो बिल्कुल सही है।
है ना. अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ, on the x axis we are having the units that is being manufactured, produce units or manufacture units, और आपका this is your total cost or sales. So this is your total cost, this is the sale. ठीक है. तो दिस पॉइंट यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आता है, इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन. ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज योर एक्स. ओके, इससे कम हम प्रोड्यूस करेंगे विल बी हैविंग लॉस, इससे ज्यादा करेंगे विल बी हैविंग प्रॉफिट, राइट. सो एट द ब्रेक इवन पॉइंट द टोटल कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेल, ये बिल्कुल सही है. रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल गलत, सेकंड स्टेटमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता. सो वी कैन एलिमिनेट ए बी ऑप्शन डी. ठीक है. तो रिमेंबर एट ब्रेक इवन पॉइंट द प्रॉफिट इक्वल टू 0, यही होता है. तो सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्राइस प्लस 0. तो एस इज इक्वल टू एफ प्लस, वी कैन से टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एस. नेक्स्ट वाली लाइन में वी कैन, ठीक है. तो ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये आपने वन. टोटल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, वो कभी नहीं होगा. वी आर हैविंग दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन द स्क्रीन. फॉर सेल्स फोरकास्टिंग पूलिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन इज मेड राइज ऑफ. For sales forecasting the pools of experiment is which, मतलब क्वेश्चन ये है पूल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन हम किस मेथड में डिस्कस करते हैं. स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन, डेल्फी टेक्निक, मूविंग एवरेज मेथड या आपका एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. If you remember the pooling of expert opinion we are using for the long range forecasting, right? Also we are using for the new product, so that is definitely we are talking about the Delphi technique. Delphi technique याद है? Very good. Delphi technique is that technique where we are using the बहुत सारे experts होंगे and we'll be having different experts, और उन different experts से will be asking the set of questions and based on their responses we try to extract the information और उसके basis पे we try to forecast. That is basically we call it as a Delphi technique. The brainstorming of the experts, the same type of question they will be asking in the different panels experts के, right? चलिए 21st question on the screen. Which of the following technique is used for the determining the allowance in the time study? याद है टाइम स्टडी पे हम लोग अलाउंस की बात कर रहे थे. स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस. तो जो अलाउंस है दैट वी कैन आइडेंटिफाई बाय विच मेथड? एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, लीनियर रिग्रेशन, परफॉर्मेंस रेटिंग और वर्क सैम्पलिंग. यस, याद है? याद कीजिए टाइम स्टडी मॉडल में जो अलाउंस है दैट वी कैन आइडेंटिफाई और डिटरमाइन बाय अ सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉल्ड एज वर्क सैम्पलिंग. वर्क सैम्पलिंग, वर्क सैम्पलिंग से बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द अलाउंस द टाइम स्टडी. ठीक है, टाइम स्टडी मेथड में हम लोग वर्क सैम्पलिंग यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. 22nd क्वेश्चन जाने से पहले 25 और 26 का जो बैच है ऑलरेडी दैट इज बीइंग लाइव. So you can do enjoy these sessions in both English and Hindi. If you have any doubt or difficulty related to this course, you can do call as this number. Our backend team will be helping out for any doubt you are having. Okay, fine. Chale, next question. Fixed investment of manufacturing a product in a particular year is 80,000. Estimated sale for this product is 2 lakh. The variable cost per unit for this product is 4 rupees. If each unit is sold at 20, what is the break even point? आपको बताना है किस पॉइंट पे आपको ब्रेक इवन मिलेगा. अगर ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली उसका जो फिक्स प्राइस है दैट इज 80,000. एस्टिमेटेड सेल्स फॉर दिस पीरियड इज 2 lakh.
Variable cost is for each unit, that is selling price is rupees 20. What is the break even point? Quickly, what is the break even point? Fixed price दे रखा है 3000. आपको सेल्स दे रखा है एट सम for this period is equal to 2 lakh, and I think that would be required. Variable cost per unit is rupees 4 per unit, and selling price per unit is equal to 20 per unit. Okay, आपको निकालना break even point. So we know that break even point XBEP is equal to fixed price by the selling price minus the variable cost. So that is equal to 80,000 divided by 20 minus 4. So this is 80,000 divided by 16. What is the final answer? What is the final answer? A, B, C or D? कितना रहा है? 5,000? 5,000 यूनिट्स ऑप्शन बी. ये जो वैल्यू है ना वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. ये किसी प्रॉफिट पे आपको इतना आ रहा है. द टोटल सेल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर इज टोटल सेल दैट इज 2 लाख. हमें उससे मतलब नहीं है. वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट. उसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है. क्लियर है? इज दिस क्लियर? डन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए लेट्स मूव टू द 23rd क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. If orders are placed once in a month to meet an annual demand of 60,000 units, what is the average inventory would be? What is the average inventory would be? Quickly. What will be the average inventory? तो एनुअल डिमांड आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू 6,000 यूनिट्स पर ईयर. नंबर ऑफ ऑर्डर इज वंस इन अ मंथ, मतलब 12 ऑर्डर्स वी आर प्लेसिंग एवरी ईयर. आपसे ये पूछा है व्हाट इज द एवरेज इन्वेंट्री. पहले तो ये बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट यू हैव टू प्लेस. हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू प्रोक्योर इन एवरी ऑर्डर. व्हाट इज द इन्वेंट्री साइज. Q इज इक्वल टू D by N. जैसे n is equal to D by Q, so from here we can calculate the of Q. 6,000 divided by 12, that is equal to 500 units. अब ये जो है that is the inventory that we are procuring. Question में क्या पूछा? What is the average inventory? We know that average inventory is equal to 0 plus Q by 2. That is equal to Q by 2. That is 250 units. Option correct answer. ये याद आया आपको क्यों हम 0 plus Q कर रहे हैं? क्योंकि अगर इफ यू ट्राई टू रिमेंबर द बेसिक EOQ मॉडल होता है आपका दिस टाइम दिस इज Q करके होता योर बेसिक EOQ मॉडल. दिस इज योर मैक्सिमम इन्वेंटरी. इट हैज Q और ये आपका 0. तो एक साइकिल में जो इन्वेंट्री है वो Q से 0 तक होता है. तो वी कैन से इन वन साइकिल व्हाट इज द एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 0 प्लस Q, दैट इज Q. ठीक है. सो दैट सेम फॉर्मुलेशन वी आर यूजिंग. ऑप्शन बी इज द फाइनल. 250. वेरी गुड. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. एसेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी है. Shortest processing time, that is SPT algorithm, reduces the waiting time of the batch while processing. Reason is SPT rule always meets the due date requirement. Option A, B, C or D. Option A, B, C or D. देखो हमेशा याद रखिएगा SPT चाहे कोई भी हो, EDT हो या SPT हो या CR रूल हो या फिर आपका क्रिटिकल रेशियो रूल हो या SPT हो या EDT हो या STR रूल हो, slack time remaining, no method is able to fulfill the due date always. कभी भी कोई मेथड always due date को requirement को fulfill नहीं करेगा. So reason is not at all correct. Option C is the correct answer. हाँ, SPT is basically used to have the
मिनिमम जॉब फ्लो टाइम, है ना, जॉब फ्लो टाइम को मिनिमम करने के लिए ये वो यूज किया जाता है, राइट। तो डेफिनेटली वेटिंग टाइम की आपका इसमें कम होगा, बट दैट डजंट मीन ऑलवेज विल बी एबल टू मीट द ड्यू डेट, राइट। सो रीजन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। so now let's proceed to the last question of today's session. A work shift is for 8 hours duration. एक shift work shift है that is total of 8 hours, जिसमें 30 minutes is the lunch break and 250 minutes rest is there. Products are assembled at a rate of 60 per shift. The total assembly time for a product is 42 minutes. What should be the minimum number of workstations required? Workstation का क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक शिफ्ट में 8 घंटे हैं जिसमें 30 मिनट्स लंच है और 15-15 मिनट की तरह 2 ब्रेक्स। So can be what is the effective work shift hours? What is the effective duration of shift? बताइए, एक्चुअल में आप कितना देर काम कर रहे हैं? आइडियली 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट है जिसमें हाफ एन आवर आपका लंच है और 15 मिनट का 2 ब्रेक है, सो आइडियली इट इज 7 आवर्स। Ideally it's 7 hours, that is equal to 7 into 60, that is 420 minutes, ठीक है। अब एक शिफ्ट में यू आर मैन्युफैक्चरिंग 60 प्रोडक्ट्स नीड टू बी असेंबल्ड, ठीक है। एवरी शिफ्ट 60 प्रोडक्ट्स नीड टू बी असेंबल्ड, प्रोडक्ट्स आर assembled in each shift, right? और एक असेंबली को यू आर टेकिंग 42 मिनट्स, वन प्रोडक्ट इज टेकिंग 42 मिनट्स फॉर। तो मुझे बता सकते हैं टोटल कितना समय चाहिए आपको 60 प्रोडक्ट्स को असेंबल करने के लिए? वी कैन से टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज, टोटल टाइम टेकन is 60 into 42, and this much of time will be required to assemble all the 60 product, to assemble all 60 product, ठीक है। अब हमारे पास 420 मिनट्स है टोटल, तो कैन वी से नंबर ऑफ वर्क स्टेशन विल बी, नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस रिक्वायर्ड विल बी, आपको टोटल 60 इंटू 42 इतना आपको समय लगेगा। आपके पास जो टोटल समय है दैट इज 420, यहां पे अगर हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू 6 वर्क स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड। आपको 6 वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू फुलफिल द 60 प्रोडक्ट्स, तभी आप 60 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अगर आप एक ही वर्क स्टेशन यूज करते हैं तब आप 60 प्रोडक्ट्स नहीं। This is clear? Okay, simple unitary question है, option C is the correct answer. The total workstation required will be 6 workstation. Okay, clear? Done. ये आपका workstation question from the assembly line balancing, right? So this is the total questions, 25 questions from the industrial engineering for the ESE 2024. This is the interface of the app class. App में भी आपके different classes are going on. Do join that also. Along with that, if you have any doubt or difficulty, you can do contact me on my Telegram channel. I'll be live every time. I will be happy to help you out, right? If you have any doubt with any of the subject that you are studying, right? Okay, so that's it from my side. तो कल हम लोग मिलेंगे. Tomorrow we'll be meeting with a very important session, that is mechatronics and robotics, ठीक है। कल हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स पे होगा, वही सेम टाइम 6 PM को मिलेंगे, राइट, एंड विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स टुमारो एट 6 PM. Tomorrow at 6 PM we'll be meeting, and right, so that's it from my side. I think everything is all clear, all done. If you have any doubt, I'm happy to help you out. Okay, so thank you guys, bye bye, take care, stay safe and enjoy your preparation with Byjus exam prep. रोज sessions हो रहे हैं, effectively use this free sessions to improve your learning, to excel in the exam. Okay, thank you guys, bye bye, take care, thank you all of you, bye bye.